Dada Sham, Dada it Sham. is 7:30. We'll get started. Kindly mute your mics. Dada Sham, Dadaji Pyari Sangat, साधु वासवानी सेंटर वॉशिंगटन डीसी जे तरफां असां सभिनीनि जो स्वागत था कयूं on this Guruvar with Gurudev Satsang. Today we will have with us Manav Lalwani from New Jersey, who will be singing Dada's Glory, and we are happy to welcome him in our midst today. He'll be joining us shortly, but we'll start with a protocol with Guru Brahma and Gobind Uncle taking the Sukhmani Vachan and Bhaj Govindam, Gita chapter 12. Goodiji will take say the Triambakam Jap, and then we'll have some bhajans and kirtans with Dada's lecture as well. So stay with us and enjoy this blissful evening, Guruvar with Gurudev Satsang. Dada Sham. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha Dada Sham. Om Satnam Shri Vaheguru. Sukhmani Sahib Pauri B. Shlok B. Pauri B. Sagal Shrishth ko Raja Dukhiya, Har ka naam japat hoy sukhiya. Lakh karori band n pare, Har ka naam japat nistare. Anik maya rang dikh n bujave, Har ka naam japat agave. जह मार्ग ए जात केला, तह हर नाम संग होत सुहेला. ऐसा नाम मन सदा ध्याए, नानक गुरमुख परम गत पाए. अर्थ दादा शाह जो सिंधी वचन में, सारी सृष्टि जो राजा भी दुखी रहे तो, जो हरि जो नाम जपे तो सोई सुखी आहे. लखन करोड़े तकलीफन में को फासे, तभी हरि जो नाम जपण करे संदस निस्तारो थी पवे. दुनिया जे अनेक मज़न मां अंदर जी तृष्णा नथी बुझे, पर हरि नाम जपण सां तृप्ति थिए थी, सुख प्राप्त थिए तो. जंहिं राह में अकेलो वञणो आहे, उत हरि नाम ही सहायक या मददगार थींदो. ए मन अहिड़ो नाम तूं सदा ध्याए, ऐं गुरमुख थी परम पदवी मुक्तिया जो मंजिल प्राप्त कर. दादा श्याम धन गुरु नानक. भज गोविंदम श्लोक 17 खां 20 ताईं. मोह वने वने अज्ञान, दूर थिए सब शक गुमान. चंचल मन एकाग्र थिए, सचखंड डेसो सहज हले. उठ जाग अंजलि अखियां खोल, सब थई वाणी गोविंद गोल. भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम. सचखंड जी जो पाए परूर, दुख दर्द खां रहे सो दूर. सचखंड आहे असली धाम,
पहुँचाए सो जो धियाए नाम। उठ जग अंजलि अखियाँ खोल, सब थई पानी गोविंद गोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। तिन्ही लोकन में इक ही बेरी, गुरु कृपा जप करना देरी। संतन चरणन वेह जरूर, वठ खास खजानो चरणन दूर। उठ जग अंजलि अखियाँ खोल, सब थई पानी गोविंद गोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। पाठन के उअ पार पहुँचाई, तारन हार प्यासे तारन। संतन चरणन वठ तू ओट, चकर 84 की न तू मोट। उठ जग अंजलि अखियाँ खोल, सब थई पानी गोविंद गोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। दादा श्याम। Srimad Bhagavad Gita, chapter the 12th, shlokas 13 to 20, translated from the original Sanskrit into English rhymed verse by Gurudev Sadhu Vaswani. The Blessed Lord said, "Who hateth none, from self is free, in pleasure pain has poised mind, and is compassionate and kind. My best beloved saint is he, who dedicateth unto me his mind and reason, is content, controlled, his life still in me blent. My best beloved saint is he, who harms no bird nor beast nor flea, and doth not feel disturbed here by any, and is freed of fear. My best beloved saint is he, who nothing wants, doth work for me, yet is from work detached, serene, well balanced, unperplexed and clean. My best beloved saint is he, who fixed in faith and love on me, doth dote on me, yet scorneth none, and fruits of labor all doth shun. My best beloved saint is he, who is alike in pain and glee, in fame and shame, in cold and heat, to foe and friend in strength defeat. My best beloved saint is he, who bears blame, praise, is passion free, who homeless is and firm in mind, in silent love who life doth find. My best beloved saint is he. They who this nectar drink of me, and know the law that giveth life,
and cling to faith away from strife. My best beloved saint is he. Om Tat Sat. Thus endeth chapter the 12th of the Bhagavad Gita, entitled Bhakti Yoga, or the Yoga of Devotion. Tadasham. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Tuyambakam Yajamahe Sugandham Pushtivodhanam Uvavukame Bandhanam Vidyamukti Amavata. Om Shanti Shanti Shanti. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु दादा श्याम गीत वाजा सब मिठा कैरो गीत मगाया कैरो गीत मगाया गीत अलस्ती गाए गाए गीत अलस्ती गाए गाए शलची आँखे पाया शलची आँखे पाया गीत अलस्ती गाया गीत अलस्ती गाया खपे कीन दुनिया मुखे खपे कीन वॾाई खपे कीन दुनिया मुखे खपे कीन वॾाई खपी मूंखे हिकु तूं प्यारा जीवन थे सजाई खपी हिकु तूं मूंखे प्यारा जीवन थे सजाई गीत वांजा सब मिठा कहिड़ो गीत मगाया कहिड़ो गीत मगाया गीत अलस्ती गाए गाए गीत अलस्ती गाए गाए
आची ताख पाया शलची हवा खे पाया गीत अलस्ती गाया गीत अलस्ती गाया जन्म जन्म में भिट क्यों आया परे तो खासाई परे तो खासाई जन्म जन्म में भिट क्यों आया परे तो खासाई परे तो खासाई आही की न पड़े तू प्यारा दिल में बैठो आही की न पड़े तू प्यारा दिल में बैठो गीत भांजा सब मिठा कैरो गीत मंगाया गीत अलस्ती गाया गीत अलस्ती गाया निहारी प्यो पुकारी प्यो सिक में प्यो सनी निहारी प्यो पुकारी प्यो सिक में प्यो सनी हिक बार तुझा चरण चुमामा मूंखे थी न छनी हिक बार तुझा चरण चुमामा मूंखे तू न छनी गीत भांजा सब मिठा कहिड़ो गीत मंगाया गीत अलस्ती गाया गीत अलस्ती गाया मेंढ मुंहिंजी तो में सभाई अंजलिय जाए राणा अंजलिय जाए राणा मेंढ मुंहिंजी तो में समाई अंजलिय जाए राणा अंजलिय जाए राणा तू ही मुंहिंजो सब कुछ नूरी ॿियो को मां न सुञाणा ॿियो को मां न सुञाणा गीत मुंहिंजा सब मिठा कहिड़ो गीत मंगाया कहिड़ो गीत मंगाया गीत अलस्ती गाए गाए गीत अलस्ती गाए गाए शलची खे पाया शलची खे पाया गीत अलस्ती गाया गीत अलस्ती गाया गीत अलस्ती गाया दादा श्याम Thank you, Bhagwan Uncle. That was beautiful. I'm going to sing today Gati Main Kya Janu. It's an old bhajan from 1970s. I'm trying, so hopefully you like. सुर की गति मैं क्या जानूं सुर की गति मैं क्या जानूं एक भजन करना जानूं सुर की गति मैं क्या जानूं एक भजन करना जानूं अर्थ भजन का भी अति गहरा उसको भी मैं क्या जानूं
प्रभु प्रभु करना जानूं, प्रभु 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 करना जानूं, नैना जल भरना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, गुन गाए प्रभु न्याय न छोड़े, फिर क्यों तुम गुन गाते हो, फिर क्यों तुम गुन गाते हो। मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, इतनी बातें क्या जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, एक भजन करना जानूं। दादा श्याम। Beautiful, Ganesh ji, beautiful. Thank you. Thank you, Ganesh. That was wonderful. And now we welcome Manav, who will sing for us. Thank you, Manav, for joining us. He's from New Jersey and a big Dada's devotee. And we are happy to have you in our midst and cannot wait to hear you. Thank you for joining us. Dada Sham, thank Dada you Sham. all so much. I'm sorry that my camera is not on, but looking forward to us all looking deep into Dada's eyes and we can enjoy this bhajan together. Thank you again so much for this warm welcome to your beautiful, beautiful Sunday. Dada Sham. दादा श्याम मानव जी, Dada Sham, Auntie, Dada Sham. थैंक यू। So on this Guru Dev, on this Guru Var, we will sing Guru Bhajans together. We'll start with Guru Dev Mera Hai Aadhar. Guru Dev Mera Hai Aadhar. हाँ Guru Dev Mera Hai Aadhar. उन बिन जीवन है दुश्वार, उन बिन जीवन है दुश्वार, गुरुदेव मेरा है आधार। हाँ गुरुदेव मेरा है आधार। गुरु चरणन मेरी जीवन नैया, गुरु चरणन मेरी जीवन नैया, सब कुछ उनको है अर्पण किया, सब कुछ उनको है अर्पण किया, गुरुदेव मेरा है आधार। हाँ गुरुदेव मेरा है आधार। गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत, गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत, गुरुदेव मेरा एक ही दोस्त, गुरुदेव मेरा एक ही दोस्त, बिन गुरुदेव है सब अंधकार, बिन गुरुदेव है सब अंधकार, गुरु बिन कौन
लगाए पार। गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरुदेव मेरा है आधार। हाँ, गुरुदेव मेरा है आधार। गुरु ही एक उम्मीद सहारा। गुरु ही एक उम्मीद सहारा। गुरु को अर्पण जीवन सारा। गुरु को अर्पण जीवन सारा। हो गुरुदेव की मैं दासी दीवानी। गुरुदेव की मैं दासी दीवानी। जैसी तैसी अंजलि तुम्हारी। जैसी तैसी अंजलि तुम्हारी। जैसी तैसी अंजलि तुम्हारी। गुरुदेव मेरा है आधार। हाँ, गुरुदेव मेरा है आधार। उन बिन जीवन है दुश्वार। उन बिन जीवन है दुश्वार। गुरुदेव मेरा है आधार। हाँ, गुरुदेव मेरा है आधार। दादा श्याम। गुरुदेव प्यारा। 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 तुंहिंजा थोरा मूते आहिन लख हजार। हीअ जीवन समूरी आहे तुंहिंजो उपहार। गुरुदेव प्यारा। गुरुदेव प्यारा। गुरुदेव प्यारा। हिक हिक श्वास सां तोखे संभारिया। हिक हिक श्वास सां तोखे संभारिया। दिल जे धड़कन सां तोखे पुकारिया। दिल जे धड़कन सां तोखे पुकारिया। गुरुदेव प्यारा। गुरुदेव प्यारा। गुरुदेव प्यारा। गुरुदेव प्यारा। आहिया मुर्शिद तुंहिंजो मां तुंहिंजो समूरो। आहिया मुर्शिद तुंहिंजो मां तुंहिंजो समूरो। कयम अंजाम तोसां करियां शल पूरो। कयम अंजाम तोसां कयम शल पूरो।
दिल जे सिंहासन ते तोखे विहार्यम दिल जे सिंहासन ते तोखे विहार्यम गिलहन गोरा गाढ़े तोखे पुकारयम गिलहन गोरा गारे तोखे पुकारयम गुरुदेव प्यारा गुरुदेव प्यारा गुरुदेव प्यारा गुरुदेव प्यारा खपे की न दुनिया जो मान शान वडाई खपे की न दुनिया जो मान शान वडाई खपी तू मिठा थे जीवन सजाई खपी तू मिठा थे जीवन सजाई वठी हल मुखे तू रोशन पंहिंजे राह वठी हल मुखे तू रोशन पंहिंजे राह करे महर मूं ते अंदर बार बाह करे महर मूं ते अंदर बार बाह गुरुदेव प्यारा 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 हम ताए ममता के खिन में जलाए हम ताए ममता के खिन में जलाए खुदी अखे मारे खुदा सा मिलाए खुदी अखे मारे खुदा सा मिलाए तुझे दर ते नूरी आया एक फकीर तुझे दर ते नूरी आया एक फकीर पिने तो खा अंजलि आशिका देव की पिने तो खा अंजलि आशिका देव की गुरुदेव प्यारा 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 Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you. Now, you sang from the depth of your heart, and I could feel it here. It brought tears to my eyes. So much depth and so much soulful this was. It was such a pleasure to hear you, and thank you for joining us today. It was very blissful. Thank you for the blessings of this beautiful Sangat. If you felt anything, it came directly from Dada. Dada Sham. Manav, this is Govind Singh. Dada Sham to you. Uncle, I'm so happy to see your face. I can't tell you, after so long, I'm getting the blessing of your face. Thank you. I was wondering whether you'd recognize me. That's why I wanted to. Of course. As soon as I saw you earlier, I told my dad, I said, see how Uncle's grown a beard? Dada Sham. Uncle has not grown beard. Uncle has started to become a Sardar. So that's a requirement of being a Sardar. Love it. It's beautiful. Dada Sham. Thank you. Dada Sham.
नूरी सिमर सिमर सुख पाए, नूरी सिमर सिमर सुख पाए। वचन फ्रॉम नूरी ग्रंथ 405। गुलाम तुंजो, तू सूरत जो सुल्तान, करमू ते तू एहसान, दर ते थिया गुलाम तुंजो। सुपनन में सजण तोखे ॾिसां, खोले अखियूं हिक तोखे पसां। न विसारिया हिक पैगाम तुंहिंजो, जित बिहारी जित बिहारी, सदा शल फज़ल में नियारी। प्रीत में पहुंचाया सलाम तुंहिंजो, प्रीत में पहुंचाया सलाम तुंहिंजो। दादा श्याम, दादा श्याम। Dada Sham, English translation. The King of Beauty you are, pray grant me this favor that I be a slave at your door. Beloved, let me see you in my dreams, and when I open my eyes, then too let me see only you. And let me never forget your message. Wherever you place me, wherever you seat me, may you ever grant me a glance of grace, and let me with love convey your greetings to all. May you ever grant me your glance of grace, and let me with love convey your greetings to all. Dada Sham. Dada Sham, we'll have the Aarti now. दीन दयालु
गुरुदादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे। तुझे नूर नूराणिय में नूरी अंजलि करे निवास। तुझे नूर नूराणी में नूरी अंजलि करे निवास। जन्म जन्म में दर्जी दासी नबी का आहे प्यास। मोरे सतगुर दादल शाह। ओम जय 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 जगदीश हरे। दीन दयालु सद कृपालु मोरे सतगुर दादल शाह। मां मंगतो तू शाह वाली दे मुख मेहर निगाह। मोरे सतगुर दादल शाह। दादा श्याम। हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्णा राम दादा श्याम। 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 दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम। दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा राम 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 दादा श्याम। Dearest Dada, you have said that there is nothing better than doing satsang. But a lot of times while doing seva, we miss out on satsang. Is seva equal to satsang? You must do seva in the spirit of satsang, as though you are doing satsang. Seva is not the end in itself. Seva is only a means. And seva should be done in the spirit of a satsang. The two should be blended. They asked God, do you prefer that we go and work for you, or would you prefer that we give you the love of our heart? And God answered, work for me with love. Both the things must go together. You must do seva, but in the spirit of satsang, as though you are doing satsang. There are people who do seva and they keep on hearing, actually listening. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Sham. They keep on hearing, listening, and they keep on doing seva. So the two should be blended together. Yes. Dearest Dada, how does one remain strong and stable in testing situations? In testing situations. If you believe that what you are doing for the love of God, not with a view to win the praise of the people or any other ulterior motive. If you are doing whatever you are doing for the love of God, you will always be stable. Your stability will not shake. It is only because the ego comes in, the ego wants something, disturbance starts. If your work is non-egoistic,
If it is offered completely to the Lord, you will never have any feeling of disturbance. No. Therefore, the Lord says in the Gita, speaking unto his dear devoted disciple Arjuna, the Lord says, Arjuna, whatever you eat, now eating is something, it's an ordinary thing, but he says whatever you eat, whatever you give in charity, whatever austerity you practice, whatever you do it as an offering unto me. If you do it as an offering unto the Lord, you will never be disturbed. Your mind will always be stable. Yes. Beloved Dada, how do we explain the importance of living a morally right life to today's youth? Firstly, a youth who has lived an immoral life, if he has done an immoral act, he will always have a reaction within him. He will himself feel that he has not done the right thing. That feeling will come to him. Because within each one of us there is what we call the buddhi. The buddhi will keep on sending signals to him that you have not done the right thing. And secondly, by becoming a role model, you should live in such a way that those around you, they feel that living a moral life is the right type of life. You have to be a role model. You don't have to speak to them. You don't have to explain to them. But through the daily life that you live, you have to show to them that happiness belongs to those, peace belongs to those who live a moral life. Then thirdly, also through the lives of the great ones who have appeared in India, outside India, their lives bear witness to this great truth, that to live the right life, you must follow moral principles. Yes. Nowadays, youths read novels which are full of sensationalism. They should be encouraged to read the lives of great ones, those that have lived a life of self-control and attained great heights. Yes. Dearest Dada, to what extent can we control the course of our life? How much is in our hands and how much is God's will and karma? Everything is in your hands. Everything is in your hands. What you call destiny or fate or kismat is something that you have made for yourself. Each individual makes his own fate, builds his own destiny. As I have repeatedly said, the beginning is in the thought. A thought which is consistently held in the mind within. It may be a cause, it may be a thought of service, it may be a thought of impurity. Sometimes we get impure thoughts. And if you let that impure thought, if an evil thought is consistently held in the mind within, it is sure to lead you to an act of evil, to an act of impurity. If it is a thought of
purity, it will take you to an act of purity. So thoughts lead to actions. And action, when it is repeated over and over again, forms a habit. And you know how terrible a habit is, don't you? If you cut off its H, a bit still remains. If you cut off its A, bit still remains. If you cut off its B, it still remains. If you cut off its I, there's no other habit. You always have the habit of T. T still remains. Therefore, and remember, it is the sum total of your habits that forms your character. And it is your character that determines your destiny. So the beginning is in the thought. You must be very careful of the thoughts that you think. If you get an undesirable thought, you must slap yourself or keep a pin with. Sadhu Vaswani, when he was a student, he used to keep a pin with himself. And whenever he got an undesirable thought, these thoughts come from nowhere. I don't know from where they come, but they come. The Prophet of Islam, Prophet Muhammad, says that temptation comes as a passerby. It comes and knocks on the door of your heart to be let in as a guest. But once you open the door and let it in, it will become as the master. It will not live as a guest. So you have to drive it out. Whenever you get an undesirable thought, get out, get out. There's no place for you. House is full. You cannot stay here. Send it out. Stamp it. Actually do it. Throw it out. So everything is in your hands, your destiny. You are the builder, no one else. Destiny is not something that is imposed on you from without. No, no, no. You are yourself the builder of your destiny. Only what you do today, what you think today, becomes your destiny tomorrow. What you did yesterday, what you thought yesterday, has become your destiny today. You are yourself binding yourself with fetters. You are yourself tying ropes around yourself. And you are the one who will have to liberate yourself. You are the only one who can liberate yourself. Nobody outside of you can liberate you. The Guru can show the way, but you have to walk the way. You have to move on the way. Om Brahma Kripa hi Kevalam, Krishna Kripa hi Kevalam, Guru Kripa hi Kevalam. Om Shanti, Shanti, Shanti. तू ठाकुर तुम पैयर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल सुगमरी तुमरी सूत्रधारी, तुमसे होवे सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी,
नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। दादा श्याम दादा श्याम वह जित बिहारी तुम, फजल नूरी निहारी तुम। शुक्र आहे शुक्र तुही जो, शुक्र आहे शुक्र तुही जो, शुक्र आहे शुक्र तुही जो, शुक्र आहे शुक्र तुही जो। जे लोट जो नाम अलामत बाजब हो जाई मंगा। रे खंबे रे ठुरे ओ तू त छप्पड़ तू छा, को जारो का मालूम तो थे सब की दाता तू न छड़ जाए, मांजिया तुझे आसरे। सभई पारों सूरजो वञा घोर तो ओ हिक तू न छड़ जाए, जो मुल्क मटियो तो। तुझे गंज में कमी कान काई, तुझो दर सखा जो खुलियल सदाई। करी शाह प्यादा नी प्यादन के शाई, जेका तुझी मर्जी हिंदी नेठ साई। अचे जे को तो वने की न खाली, जड़ी आस जैंगी जड़ी तो पुजारी। जड़ी आस जैंगी जड़ी तो पुजारी। जलन जी महल दादा श्याम जलन जी महल थई, जले वठ जोड़ी ॼण वारो दाता महादेव आहे। भला जेके पाए तुंहिंजे दर ते आया, उन्हनि जूं तूं आशूं मेदूं पुॼाई। कटे कष्ट तन जा मन जा, वठी पंहिंजे हथ सां साईं दर लॻाई। अहिड़ो नाथ मुंहिंजो महादेव आहे, भोलानाथ आहे। जलन जी महल थई, जले वठ जोड़ी ॼण वारो दाता महादेव आहे। भोलानाथ आए, दादा श्याम आए, दादा श्याम तेरी कृपा से सब काम हो रहा है,
करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूरीक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम ओ दादा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ओ दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। Dada Sham. God, thank you for the food we eat. God, thank you for the songs we sing. God, thank you for the friends we meet. God, thank you for everything. Dada Sham. Dada Sham. Everybody, and thank you, little angels who sang so beautifully. Today, Dada Dada Shukrana Sabninja who were able to join us and who were also not able to join us. Your blessings keep inspiring us every single satsang, and we always look forward to seeing y'all every week. And we have new folks. I see Beena Auntie from Chicago who's joined us. Thank you, Auntie, for joining us. And everybody, Kiran Murjani Didi, thank you again for joining us. Everyone, it's always a pleasure seeing everybody. And I was just wanting to ask if anybody has some birthday or anniversaries that we could sing Vadhai for everybody. Anybody? I know Deepa Auntie has from our center, but I don't think she's able to join, but we'll still sing for her. Deepa, we'll sing for Deepa. Yeah. Anyone else has anniversaries or birthdays that we can start singing? We'll share Deepa Auntie's photo because she's not there. I said, let's share her picture. She must be having fun. Dada Sham, Roma. Dada Sham, Auntie. Dada Sham. Dada Sham. Dada Sham. We'll sing Vadhai. Vadhai ho vadhai, प्यारी दीपा आंटी को vadhai. Vadhai ho vadhai, दीपा आंटी को vadhai. करे सेवा सिमरन करे जीवन सजाई, करे